Hello, hello. This is the My Artifact episode number 2879, maybe. Today's date is 27 September 2023. It's almost like a night at 10:47 p.m. 10 वाजून. Alright, so what exactly happened today? Nothing really. Yeah, yesterday I uploaded a project. It's been good. Yeah. Right now I have like a 73 subscriber. Yes, I am actually seeing a growth, not that much, but yeah, little bit. As also is that I'm actually focused on the improving quality and making video less than 10 minutes so that people can watch the video entire. As also I am making my video as fast as I can and as good as I can, trying to make the quality as good as I can. Okay. Still, right now I didn't really have that much viewers and subscribers, but yeah, it's growing, so that is good. Also, I went to search about the trending topics, which one should I like. Yesterday I uploaded video about the hotel renovator. Today I was literally stuck that which game should I play. So I went to the Google Trend YouTube research center, and it's kind of like a things that like YouTube and Google is actually telling that which topic is really trending right now. Okay, so I have bunch of games. I search about them. One of the game is really popular is car for sale simulator. Yeah, it is too much. Then I search about other games too, like GTA 5, then Minecraft, then BGMI. So on that, every perspective BGMI is on top. Mine in India, okay. Then Minecraft, then GTA 5, then Car for Sale Simulator. So let's talk about the BGMI. I haven't really play this BGMI game, and also another thing is that I am really not so sure how should I execute my gameplay, because it just like basically na, like there are some certain possibility. Yeah, I can play so many games, but I can't make as a content creation, because in the content creation process there are so many things. My video shouldn't has to be bore. In particular gameplay, the only one thing that you have to do constantly that makes gameplay a little bit of bore, let me tell you is that I love Forza Horizon. I also play Forza Horizon 5. Even in the Google trend, Forza Horizon 5 is on higher than Car for Sale Simulator. But I won't be able to play. I won't be able to upload Forza Horizon 5. Why? Because of that, in the Forza Horizon 5, you just have to do only one thing: drive the car. Okay, with particular road and things like that. From as a playing perspective, it feels good, but from the viewer perspective it doesn't feel really good, because you are actually showing a kind of like something really same screen. Okay, and car is going, and you didn't really have kind of like a privilege to do some sort of creativity. Yeah, like basically, yeah, I can play Forza Horizon on like on particular, like basically on the stream or things like that, but usually in the video, no, because in the video I have to make kind of like a something really like a people should get something. Okay, yeah, I'm actually thinking about that. I wanted to play longest race on Forza Horizon 5, but eventually like I try, but it just doesn't make that much kind of like something really sense. Okay, like yeah, almost like a 6 months ago I played Need for Speed Most Wanted, so I was playing multiples of car with multiple races, but it didn't really work that well. So I don't know, yeah. So it is a kind of like a something really that some people like, some people don't really like. Why I'm not playing such a game? Because of that, I just wanted to I just want that people will watch my video not for the game, for me. Okay, if I play Forza Horizon, if I play Minecraft, or if I play GTA 5,
then basically most of the people are watch my video just for GTA 5 and Minecraft. Yeah, I also can contribute some sort of content and creation so that people can watch me too, but still it's just like that. Now in GTA 5 I also try GTA 5, but it's just like I don't know. Okay, like I have so many ideas about the GTA 5 too, but right now at this moment, still I think that ki car for sale simulator or some sort of simulator game are kind of like a something really best execution technique. I just wanted to understand by myself more. Okay, like basically like I can make video on so many games like BGMI and everything, but dude, yeah, like it's a long process. You have to understand. Okay, yeah, I can play some of the games too, but usually playing game and recording my shuckle and gameplay and uploading on the YouTube platform, it doesn't really work like that. Okay, most of the popular YouTuber, they can do that because they are actually doing this thing for almost like years, and they have kind of like a something really potential audience. Okay, so if I play BGMI or if I play random kind of like a something really GTA 5 or Minecraft, then I am the kind of like a person who is actually playing popular game, and that's all. Okay, I just wanted to make my identity as equivalent to the game as well. Okay, in the editing style, in the in the commentary and things like that. So that's why I'm trying. That's why I'm improving my content. And simulation games are actually kind of like something is good. It has so many things. As example, car for sale simulator, there are everything is actually happen in every second. Okay, frame is changing, everything, the information is getting rapidly third. Okay, like in the content creation process now, it's a lot of things. Okay, like sometimes content, sometimes like a sometimes as a viewer has to be wait for particular thing that you will get, like in the Forza Horizon, as an audience will get at the end of the video when you will win the race or not win the race, whatever it is. Okay, but my point of view is that when then the viewer is actually watch my video, they have to get from every second from my video that this and that and that and that and that they constantly getting, they have to be bombarded by the lot of information and lot of the value. So that is what I'm trying. That's what I'm trying to make my video as fast as I can. All right, yeah, but still it's a lot of require a lot of things. Okay, I'm trying, yes, I'm trying. All right, so in the Google trend and in the YouTube research format, car for sale simulator is the only game that I can easily make a content, as also I am little good at this game too, and as also I have this game. Okay, so I decided that I play. Actually, there is also another game, Power Wash Simulator, is actually little less. People didn't really know about. People didn't really care about Power Wash Simulator. But still, Power Wash Simulator is also kind of like a game that the value should not get from every second. No, the value should get after the end of the video. Okay, like it's actually a cleaning process, and you just have to clean the entire thing. Okay, that's it. It's a various method to clean, but still it's a clean. That's it. So I just uninstall and delete that game. Okay, I just like I didn't really find a kind of like a something really particular way to create the content in that particular game. Okay, in the gaming community now we have so many things so that I can execute the content. You just have to understand how should you do that. Okay, and that is also really essential too. Okay, yes, whatever. Yesterday I'd record artifact episode, but I was actually thinking about something else. I was thinking about my entire life, and I just like yeah. So yeah, I didn't really talk yesterday. I didn't really talk about that, and same today. I will not talk about that because it's in the future. And okay, yeah. So that's why. All right. So let's talk some of the romantic question. All right. These questions are really helpful. Okay, yeah, and this is actually first time I'm talking romantic question to myself. So
It's bit little bit of awkward, but yeah, it's good. Okay, so let's talk about the questions. uh okay, so the question is, do you prefer a fancy or casual date night? Okay. uh Usually I never really been on date. So usually is that ki if I get a date, that is good. Okay, fancy or casual, I don't know. Okay, it's a kind of like a thing that you are asking a kind of like a wrong question, a wrong asking a kind of like a very wrong person, because like like I never really experienced a date, so how should I be like how should I say that ki which one is good, which date is good, like a fancy or casual? Yeah, but from the future perspective, which date should you prefer, like a fancy or casual? mm, Sometimes I don't know, yeah, dude. Okay, like basically, like this fancy or this casual, it's not supposed to be a date. Okay, like basically, na, agar like if you are young, okay, and you like a particular person, that person is also like you, okay, but you never really talk to each other that much, and maybe this is your first or second date, okay. So at the beginning, you are bit really uncomfortable, like to talk and things like that. So at that time, having a kind of like a something really casual date, it's good, because that he when you make it fancy, then like other person not that much comfortable, because in the fancy there are so many things. Okay, you have to wear particular gown, like as a boy can wear a suit, and the restaurant is so fancy, and they are providing kind of like a something really very expensive dish, and at that time you don't know how should I behave or everything, because at that time now you don't really know each other. So if you just push to the fancy date, then it just didn't really work that well, because most of the time you are not thinking about your date, you are actually thinking about how should you behave. Okay, so at the beginning you have to be more focused on the casual date. Okay, like get a kind of like a cafe or some sort of a coffee, it's good. Okay, but if you are old, okay, if you are old means like that you know each other a lot, and you've been on date for multiple times, okay, and you are bitterly comfortable, so at that time you went to the fancy restaurant, then that date won't should that date should not called as a fancy date, because you already date, okay, and you know each other a lot. So it's a kind of like a something really doing a dinner at fancy restaurant, it shouldn't supposed to be called a fancy date. Okay, yeah, but yeah, it's just like the fancy thing has to be done when you are comfortable. Okay, that is a big advice to myself. Okay, so yeah, but which one should you prefer? Yeah, same thing, like if I'm not really comfortable with that person, focus on the casual date. I know that person, I've been on dates with a multiple time, I should prefer a fancy date. But yeah, usually I prefer to casual. Okay, because fancy dates are kind of like you won't eat that much, you are actually paying lot of money for kind of like a for the look good. ओके, लाइक बेसिकली एक छोटी सी डिश होती है जो दिखने में बहुत ही मस्त दिखती है, बट वो होती इतनी सी है, जस्ट लाइक वेरी टाइनी थिंग्स। ओके, ये आपका पेट भी नहीं भरता, बट स्टिल दैट डिश कॉस्ट यू so much. Okay, but yeah, I usually prefer kind of like a something really casual, but yeah, fancy date में class होता है। Okay, एक some sort of class that you wanted to represent to the society, represent to the partner and things like that. So हाँ, एक having a fancy date is also really essential, क्योंकि वहाँ पे आपको पेट तो नहीं भरता, वहाँ पे आपको कुछ मिलता नहीं है, but still it will get add some sort of values in your
like you are a kind of like a person that who can afford that fancy dates and fancy things, so it added some sort of values. Okay, usually वो चीज़ आप भूल नहीं पाते हो। मतलब लाइक लेट मी टेल यू वन थिंग ना, अगर आप नुक्कड़ पे जा रहे हो और करीब हाक्का नूडल्स खा रहे हो, दैट वोंट रिमेंबर यू दैट मच। ओके, वहाँ पे आपको सिर्फ 60 70 या 100 रुपये खर्च हो गए। बट इफ़ यू वेंट टू द 5 स्टार रेस्टोरेंट और वहाँ पे आपने सिर्फ 250 रुपये की चाय पी ली और 2000 का एक छोटा सा नाश्ता कर लिया, करीब 2500 रुपये खर्च हो गए और आप फैंसी रेस्टोरेंट में गए, लाइक 5 स्टार रेस्टोरेंट में, तो वो चीज़ आप ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे, क्योंकि उसमें आपका पैसा तो गया बट यू विल गेट समथिंग। वो चीज़ आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। नुक्कड़ में खाने वाले हाका नूडल्स आप 2 दिन में भूल जाओगे। सो बेसिकली दिस इज़ द वैल्यू, it added a value on your head that you won't forget that thing, because usually those things won't usually happen every day. So having a fancy date or having a things is also really essential. Yeah, it's really good, क्योंकि लाइक लाइफ में ऐसे मेमोरीज तो होना भी चाहिए ना, कि हाँ आई वेंट टू द 5 स्टार रेस्टोरेंट एंड आई ईट दैट एंड इट वॉज रियली सक, बट स्टिल इट्स गुड. So yeah, having that much memory on your head is also really essential. So yeah, once in a 6 months, once in a year or maybe twice in a year is good. Yeah. Next question. Do you like being gifted jewelry? Okay, so basically this question is belongs to the couple. Okay, like this question is that you should ask this question to your girlfriend or boyfriend. Okay, and then you communicate, understand each other. Okay, so I didn't really have a girlfriend, so basically this question is belongs to me. So in this question they says that ki, do you like jewelry? I don't know. Okay, yeah, I like jewelry as a kind of like a something really as a investment purpose, but for the wear, no. Like I didn't really wear any jewelries or any things like that, but usually having that thing for as a investment purpose, so yeah, that is good. Yeah, that's it. Next question. Do you like receiving love letter? uh Usually is that love letter, receiving love letter, yeah, it's good. Yeah, like I didn't really experience this thing as a receiving love letter वगैरह वगैरह, but usually na, like if I get some sort of positive attention from that particular person, had enough for me. It doesn't really require that ki love letter, sending a roses is good or god. Just no, it's just kind of like something really, is like the other person are actually doing this thing for me. Yeah, okay. But usually is that na, just had a smile, just give a hug, that's fine, dude. Okay, it's more than enough. Okay, if you are doing this like a love letter and things like that, but usually ये love letter वाली चीज़ें ना at the beginning में होती है. Okay, and when you are love someone, that particular person be with you for entire period of life, and you won't be able to share a love letter till the end of the death. No, it's not. Okay, so usually I think I usually I actually I think that ki having a girlfriend or having a particular person in my life is for the end of the life, and giving a love letter is kind of like a something really that ki as a short term, yeah, it's good. For the long term, it's not good. Because of that na, it added some sort of thing that is really not so good. Because of that, कि मान लेते हैं कि लड़की ने मुझे लव लेटर दे दिया, I like the love letter. The things that she wrote on that love letter was really incredible, and it added some sort of values. मुझे पहले से ही पता है कि वो लड़की मुझे पहले से ही चाहती है, और आई नो दैट आई लाइक दैट पर्सन टू. ओके, उस लव लेटर से हाँ थोड़ा सी वैल्यू ऐड हो गई है, बट नथिंग रियली दैट मच. सो यूजुअली मान लेते हैं कि काइंड ऑफ लाइक समथिंग रियली बिजी डे एंड आई डिडंट रियली हैव टाइम टू राइट द लव लेटर टू हर. ओके, so then when I went home and she says that ki where is my love letter, and you says I don't have it, then she says that ki
what the fuck, okay, I wrote this letter from my heart and things like that, and you don't really give me that love letter. Then usually क्या होता है ना कि like it's kind of like a something really that कि ये ऐसी चीज़ होती है ना कि हाँ मैंने तुझको दिया है तो यू हैव टू गिव मी समथिंग, ओके, सो दिस इज़ नॉट ओके. So usually like if you receive a love letter, then what should you do is that you just like you have to call that particular person, say your feeling regarding about the love letter and regarding what you have, and also says that ki right now I'm not really comfortable to doing giving you love letter and things like that. Might be I'm little bit busy or something that ki you don't say directly, say that ki like I don't know, okay, how should you handle the situation at that moment, I don't know, okay, but it's just like okay, so गिव द लव लेटर, ओके, राइट द लव लेटर, ओके. और जब आप उस लड़की को आप उसको लव लेटर दोगे एंड शी ऑल्सो फील रियली गुड, देन आफ्टर दैट यू सेज दिस सिचुएशन दैट कि इफ आई माइट बी बिजी देन एंड इफ आई डिडंट रियली गिव अ लव लेटर देन हाउ वुड यू फील दैट. You have to explain the particular situation scenario, okay, that ki what if such thing happened, okay, this love letter thing would not go for last, okay. क्योंकि लव लेटर बहुत ज़्यादा होता है ना कि आप लव लेटर आप खुद को लाइक यू हैव टू पुट एफर्ट टू राइटिंग थिंग्स लाइक दैट, ओके, एंड अदर पर्सन इज माइट बी नॉट दैट मच बिजी बट ही एक्चुअली लव यू ना, ओके. चीज़ें कभी कभी एक्सप्रेस करने के लिए आपको लिखना वगैरह या खुद को ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं है, ओके. समटाइम यू जस्ट हैव टू कॉल एंड से सम सॉर्ट ऑफ गुड स्टफ अबाउट अदर पर्सन एंड दैट्स इट, ओके. और मे बी यू जस्ट गेट हग. मान लो लाइक आप अगर किसी लड़की को हग भी कर देते ना, डूड यार वो हैड इनफ हो जाता है. जस्ट लाइक वन लिटिल हग और वन लिटिल किस इज बेस्ट इंस्टेड ऑफ लाइक अ लव लेटर, क्योंकि वहाँ पे एक फिजिकल अटेंशन होता है, अट्रैक्शन होता है, और उसमें कोई शब्द नहीं होता है, उसमें जस्ट आपका दिल उस दूसरे इंसान से मिलता है, दैट्स इट, ओके. सो मेक श्योर जो भी आप the way that you present your love, make sure you present your love from your action instead of words. So yeah, next question. Do you want your engagement to be surprise? No, no, I didn't really want anything like engagement is a okay. So maybe this question is actually belongs to the western particular people, like in the western, okay, western people, western people means I'm talking about Europe, US, okay. So they actually do engagement in a very surprise way. What do you mean by surprise way? Surprise way means like that कि like basically is that कि they have particular levels, okay. First of all, आप उस बंदे से प्यार करते हो, उस बंदी से प्यार करते हो, एंड यू एक्चुअली एक्सप्रेस योर फीलिंग टू दैट पर्टिकुलर पर्सन लाइक आई लव यू वगैरह वगैरह, ओके. अदर पर्सन एक्सेप्ट, सो दिस इज द स्टेज 1. स्टेज 2 इज दैट कि यू एक्चुअली प्रपोज दैट पर्टिकुलर पर्सन फॉर मैरिंग ईच अदर. आप एक दूसरे के साथ करीब साल 2 साल से रिलेशनशिप में है, and you wanted to make this step even further. So what you do is that you have to propose for married. Will you marry me? Okay, so this is called second proposal, okay. फिर थर्ड आता है कि यूजुअली अभी right now that person is actually agreed for the married, then you have to take something really a very something really crucial step, that engagement. Before the married you have to engagement, okay. So usually in India, engagement is a process that families involved and everything is involved in this thing. But in the US, in Europe, usually engagement में ज़्यादा families वगैरह involved नहीं होते हैं, okay. Like usually just like that कि engagement तो I don't know like a exchange or ring, okay. वो रिंग एक्सचेंज हो जाती है, वो भी दोस्तों के सामने वगैरह वगैरह, दैट्स इट, ओके. मोस्ट ऑफ द टाइम ये तो सरप्राइज हो जाता है,
Okay, just like she came from the office and you just decided to just surprise the engagement. So yeah, you can do that. In the US it is actually happened, but in India it didn't really happen, because in India level 1 and level 2, like you are actually like a level 1 means आप उससे प्यार करते हो और फिर उसके उसके साथ आप शादी करना चाहते हो, तो ये सारी दो चीज़ें आप एक दूसरे के साथ कर सकते हो। बट अब तीसरी चीज़ यानी एंगेजमेंट एंड शादी, मीन्स गेटिंग मैरिड, तो इन स्टेप्स में आपको फैमिली को इन्वॉल्व करना पड़ता है। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द इंडियन परस्पेक्टिव। ओके, तो एज अ एंगेजमेंट में आप सरप्राइज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली फैमिली इन्वॉल्व हो जाता है, एंड इट्स अ काइंड ऑफ लाइक समथिंग रियली बिग, क्योंकि इन US यूरोप एंगेजमेंट को इतना ज़्यादा प्रेफर्ड किया नहीं जाता। लाइक लाइक एट द टाइम विल यू मैरी मी, दैट्स इट। फिर शादी से एक दिन पहले एंगेजमेंट हो जाती है, फिर एंगेजमेंट के बाद शादी हो जाती है। ओके, बट इन इंडिया एंगेजमेंट के लिए एक अलग होता है, लाइक सगाई। ओके, फिर उसके 2-3 एंगेजमेंट बाद आप डिसाइड की जाती है कि शादी कब होगी, कैसे होगी, वगैरह वगैरह। दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द फैमिलीज में डिस्कशन होता है, दोनों फैमिली डिस्कशन होता है, हाउ इज़ दिस थिंग इज़ एक्चुअली प्रोसीड। फिर उसके बाद शादी होती है। ओके, सो इन इंडिया में ऐसे सरप्राइज एंगेजमेंट नहीं होता है, बट इन यूएस में फैमिलीज इन्वॉल्व, यूएस में भी फैमिलीज इन्वॉल्व नहीं होती यूजुअली। इज़ दैट कि जब ए लड़का लड़की शादी करना चाहते हैं तो यूजुअली या समटाइम्स पेरेंट्स आर एक्चुअली पेइंग सम सॉर्ट ऑफ मनी, बट दे आर नॉट ओके। यूजुअली अपने बच्चों की शादी करवाना यूएस पेरेंट्स में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम यूएस में लोग शादी करते हैं जस्ट फॉर दे जस्ट लाइक, मोस्टली कोर्ट मैरिज होती है, या मोस्टली लाइक दे डोंट रियली अफोर्ड दैट मच काइंड ऑफ लाइक अ वेडिंग, big wedding. So like basically is that most of the people, most of the couples is actually prepared their wedding. Okay, वो decide करते कि उनकी शादी कैसे होगी, वगैरह वगैरह, all those things. Okay, और सारा खर्चा ये दोनों ही उठाते most of the time. Sometimes families help करती है, but they don't really take full responsibility. In India में पेरेंट्स टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की होती है। कपल्स यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, नथिंग रियली एट ऑल, कुछ भी नहीं। ओके, दे जस्ट हैव टू जस्ट शो देयर फेसेस इन फ्रंट ऑफ फोटोग्राफर ऑन द स्टेज एंड जस्ट गेटिंग मैरिड, दैट्स इट। इंडिया में शादी फैमिली के पर्सपेक्टिव से होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट एज एवरेज पर्सपेक्टिव। ओके, वाई इन US यूरोप वाई इज नॉट रियली पेरेंट्स दैट मच इन्वॉल्व इन दिस थिंग? बिकॉज इन द US यूरोप में दे डोंट रियली नो, क्योंकि हमारे इंडिया में आप किसी इंसान से शादी कर देते हो ना, तो हमारे इंडिया में डिवोर्स रेट बहुत कम है। यानी हम ज़्यादा बेसिकली वी आर एक्चुअली स्टिक टू ईच अदर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, यानी पूरी लाइफ टाइम तक हम साथ निभाते हो एक दूसरे का। इन US यूरोप वहाँ पे आप अगर आप एक दूसरे को ज़्यादा पसंद नहीं करते तो आप इजीली डिवोर्स हो सकते हो, और जो डिवोर्स होने की जो प्रोसेस है इट्स काइंड ऑफ लाइक अ वेरी लाइटर दैन इंडिया। क्योंकि इंडिया में अगर आप एक लड़का लड़की को आप डिवोर्स करना है तो ऑब्वियसली यू हैव टू बीन थ्रू लॉट ऑफ प्रोसेस, एज ऑल्सो वेटिंग इज एक्चुअली हैपन, क्योंकि पहले आपको डिवोर्स फाइल करनी पड़ती है, फिर आपकी कोर्ट में पेशी होती है, कोर्ट में पेशी होने के बाद फिर आप इजीली लाइक इन द डिवोर्स एंड एट फर्स्ट टाइम लाइक व्हेन यू वेंट टू द कोर्ट, ओके, वहाँ पे आपको 6 मंथ या 1 साल का गैप दिया जाता है। मीन्स लाइक दैट कि यू एक्चुअली अगर आप एक दूसरे से अलग रहो बट आप डिवोर्स नहीं हो, स्टिल नॉट, यू आर इन बिन प्रोसेस। ओके, अलग रहो। इन 6 मंथ्स दे एक्चुअली डिसाइडेड दैट कि एलुमिनी, यानी अगर लड़का पैसा कमा रहा है, लड़की पैसा नहीं कमा रही है, तो पैसा कैसे जाएगा, क्योंकि लड़की इज़ एक्चुअली बिन थ्रू इस लॉट ऑफ थिंग्स हैपन। वो US में भी होता है, इंडिया में भी होता है, बट इंडिया में टेक्स टाइम, इंडिया में यूजुअली टाइम देते हैं। US में ऐसा नहीं होता। US में यूजुअली आप प्रोसीड करते हो, कोर्ट में जाते हो, डिवोर्स होता है। ओके, डिवोर्स होने के बाद लाइक बेसिकली डिवोर्स की प्रोसेस होते हैं ना, वो काफ़ी कम है, यानी हार्डली आप 1 महीने में डिवोर्स हो जाता है, 1 या 1.5, मैक्स टू मैक्स 3 months। आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट द एग्जैक्ट
टाइम, बट या इन इंडिया यहाँ पे सालों लग जाते हैं, करीब कभी कभी गैप 6 महीने से 1 साल तक बढ़ती है, लाइक जब कोर्ट में प्रॉपरली टाइम डेट शेड्यूल नहीं होता तब। फिर उसके बाद 1 साल बाद डिसाइड किया जाता है कि किसका पैसा किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, वगैरह वगैरह, देन डिवोर्स फाइल की जाती है। सो या इंडिया में करीब मिनिमम 1 साल तो लगता है, बट यूएस में करीब 3 या 4 महीने में, यूएस यूरोप में 3 या 4 महीने में लग जाता है। ओके, एंड ऑल्सो लाइक सम ऑफ द पीपल सेज दैट ना कि इन मुस्लिम रीजन, वहाँ पे आप किसी लड़की को 3 बार तलाक 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 कह देते हो तो क्या आप तलाक हो जाते हो? वेल, फ्रॉम द रिलीजियस पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव, हाँ, ओके, किसी एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से आप 3 बार तलाक देते हो तो फ्रॉम यू आर एक्चुअली लाइक उस लड़की से आप डिवोर्स हो जाते हो, बट फ्रॉम लाइक इट्स ए रिलीजियस पर्सपेक्टिव, ओके, बट इन द वी आर लिविंग इन सोसाइटी जहाँ पे आपको लॉज फॉलो करने पड़ते हैं, ओके। तो रिलीजियस पर्सपेक्टिव में हाँ 3 बार तलाक देने से तलाक हो जाएगा, बट एक्चुअली इन द इन द in the law, in the society rules, you have to follow the rules, okay, and that takes time also, okay. So yeah, so the question is that question tha ki like engagement, yeah, I'm talking about the engagement. No, in India हमारे यहाँ surprise engagement, no, and I didn't really want to be a kind of like a engagement has to be surprise, no, not at all. Do you want to have a say? Do you want to have a say in your engagement ring? Okay, uh, okay, same thing, okay, this question is actually belongs to the US, okay. तो इन यूएस में क्या होता है, जब आप लड़की को रिंग पहनाते हो, ओके, सो यू हैव टू से सम सॉर्ट ऑफ वाउज यानी क्या होता है कि शपथ, ओके। सो बेसिकली दे हैव टू से समथिंग टू हर दैट कि हाँ मैं उस लड़की को करीब 7 जन्मों तक साथ रखूँगा, वगैरह वगैरह। व्हाट इज एग्जैक्टली, इंडिया में ऐसा नहीं होता है, ओके, इंडिया में ऐसा नहीं होता है, बट इन फैंसी लाइक बेसिकली इंडिया में अगर नॉट दैट मच, ओके, यूजली नहीं हो, क्योंकि लड़का लड़की दे आर नॉट एक्चुअली, क्योंकि हमारे इंडिया में जो शादी होती है वो काफ़ी इन फ्रंट ऑफ फैमिली, इन फ्रंट ऑफ रिलेटिव्स के सामने होती है, ओके। वहाँ पे बात करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, एंड बेसिकली तो आप एक दूसरे से शादी कर रहे हो, आप एक दूसरे को प्यार करते हो, और आप प्यार का इज़हार आप शब्दों से कर रहे हो, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाए। इट रिक्वायर्ड करेज। इंडिया में वो बहुत करेज नहीं है। वो क्या यूएस के पास वो, यूएस में वो करेज है? नहीं, उनके पास भी नहीं है, क्योंकि उनके शादी में लोग ज़्यादा आते ही नहीं है। हार्डली पेरेंट्स आ गए, उनके पेरेंट्स आ गए, हैड इनफ, दैट्स इट, ओके। जो काफ़ी क्लोज, क्योंकि इंडिया में बहुत है यार डूड, लाइक बेसिकली हमारे इंडिया में चाचा, मामा, काका, काकू, मामी, ताई, आत्या, काकू, देयर आर लॉट ऑफ रिलेटिव्स। यूएस में कोई रिलेटिव नहीं है, लाइक मदर एंड फादर के अलावा, दैट्स इट, मदर, फादर, ब्रदर एंड सिस्टर, दैट्स इट, बस 4 ही रिलेशन है। देयर इज़ नो अंकल, देयर इज़ नो आंटी, देयर इज़ नो, वो अंकल आंटी तो हमने इन्वेंट किया है। अंकल आंटी, दीज आर द थिंग्स लाइक देयर काका काकू बोला है उन्होंने, ओके। बट यूजुअली इन यूएस दे हैव ओनली 4 like a relationship, like a mother, father, brother, sister, father-in-law, mother-in-law, brother, that's it, okay, बस इतना ही है, that's it, उससे ज़्यादा तो है ही नहीं। हमारे इंडिया में बहुत सारे ये है, ओके। सो यूजुअली इन इंडिया वी डोंट रियली से सम सॉर्ट ऑफ vows, ओके। इन क्रिश्चियन वहाँ पे भी ऐसा नहीं होता है, ओके, क्योंकि वहाँ पे भी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ओके। यूजुअली इंडिया में भी क्रिश्चियन समाज के बहुत सारे लोग हैं, एंड यूजुअली इन द एंगेजमेंट सेरेमनी, आई एम टॉकिंग, दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली बिलोंग्स टू दैट कि एक क्रिश्चियन शादी में इसी तरह से होता है, ओके। पर्टिकुलर पीपल इन फ्रंट ऑफ योर रिलेटिव्स वगैरह वगैरह, उनके सामने लड़का लड़की को एक तरह से वाव करता है, यानी वाव मीन्स लाइक शपथ देता है कि मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। सेम थिंग गोज विद द लड़की टू। So this scenario is actually happen in the Christian wedding, okay. Indian wedding में तो नहीं होता है।
अभी इंडिया में भी क्रिश्चियन लोग होते हैं, तो क्या उनकी कम्युनिटी में ऐसा होता है? I don't know. Okay, I never really been on the Christian wedding, so I didn't really know about them. But there is one thing for sure is that कि still वो इंडिया में क्रिश्चियन है, बट स्टिल दे हैव लॉट्स ऑफ पीपल. वो उनके पास बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं. स्टिल दे हैव काका मामा काकू शेजारी वगैरह बहुत सारे लोग होते हैं. सो आई एम रियली नॉट सो श्योर अबाउट दैट थिंग. ओके, बट विल यू बी टेक अ वाव? I don't know, dude. Yeah, I will have that much courage, but sometimes ना you have to understand the situation. कभी कभी आप as a romantic में आप उस लड़की की शपथ देना चाहते हो, that makes it something really romantic, but you have to understand the situation and gravity, things like that. कभी कभी वो काफ़ी like it should not supposed to be a flop. Okay. हाँ, having a courage, हाँ मेरे में बहुत ज़्यादा courage है, I can do that, but is it really necessary? Okay, क्योंकि इंडिया में it's not. Okay, so yeah, I've been talking about from 36 minutes, so yeah, that is good. I just don't want it to extend even more further. After this 35 episode I won't do anything that much. Okay, just मुझे बस वीडियो फाइल एनकोड करनी है. Tomorrow I will start doing editing. All right, this is it, this is then. Thank you.